हेलो दोस्तों, मैं अपूर्ण शाइन और आप सबका स्वागत है वापस से मेरी एक और नई वीडियो में। आज वापस खेलने वाले हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी। ये होने वाला पार्ट 18 उसका। आई होप आपको चीज में मजा आ रहा होगा, लाइक करना। आप देख सकते हैं लास्ट पार्ट को आई बटन में, जिसमें हम लोगों ने एक मेन क्वेस्ट की काइंड ऑफ स्टार्टिंग करी थी, बट सेबेस्टियन ने या तो साइड क्वेस्ट थी या मेन क्वेस्ट थी। तो सेबेस्टियन ने बोला था कि हमारा इंतजार कर, मतलब मेरा इंतजार करना, मैं आपको आउल से इंफॉर्मेशन भेजूंगा। तो वो जब मैंने लास्ट पार्ट खत्म किया उसके कुछ मिनटों बाद वो आ गई थी इंफॉर्मेशन, बट मैंने उसके बाद बंद कर दिया था गेम। तो दैट्स वन थिंग। एंड उसके अलावा हम लोगों ने साइड क्वेस्ट कुछ कंप्लीट करी थी लास्ट पार्ट में, तो वो सब आप देख सकते हैं आई बटन में। एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू, सो लेट्स गो। ओके गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेस्ट अवेलेबल हो गई थी, ये वाली आई गेस यही वाली थी। हाँ, मेरे हिसाब से तो यही वाली थी। ट्रैक क्वेस्ट। ओके, वो क्वेस्ट इधर है या इधर है? हाँ, इधर है। तो ये कौन सा है? मीट सेबेस्टियन इन द कॉमन रूम, ग्रैंड स्टेयरकेस। इकड़ मैं झंडे से देखता हूँ। ग्रेट हॉल। आई थिंक सो हमें बस यहाँ से जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। I'm just gonna switch my profile of my controller, क्योंकि मैंने फोर्टनाइट में ट्राई किया बट एक्चुअली मुझे डिले आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैंने इस कंट्रोलर से नहीं खेल रहा हूँ मैं अभी। जब तक वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता ना फोर्टनाइट पीसी पे, तब तक पॉइंट नहीं है इससे खेलने का। बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। वो मैं जो तरीका उन लोगों ने ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे देखा, तो जो तरीका उन्होंने बोला है वो बहुत डिले वाला है। तो आई जस्ट डोंट वांट इट। मतलब मैं एम करता हूँ उसके 1-1.5 सेकंड बाद तो वो वहाँ रजिस्टर होता है। I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. ओके ठीक है, सब बस्ती है। तो ये आगे जाएगा जब भी तो मैं। Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. ओके, ओमिनस। Revelio here. तो बात करते हैं। Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory.
Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Yeah. My guess is ये वाला ट्राई करते हैं. Incendio. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Okay. Okay, I think so. मेरे को ये वाले की जगह दूसरा ये वाला रखना पड़ेगा. I swear it wasn't what you think, my cherub. Your eyes deceived you. Level 1 lock. क्या पता कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए इसी बहाने. देख, लेवल 1 लॉक तो आसान है खोलना, बट कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए. वाह. Confringo. जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, बुरा मत मानो. ओके, हमको ना वहीं से मुझे सब पे करना पड़ेगा. Something's happening. मेरे को लगा ही था. Ready for this. मेरे को लगा ही था कि ऐसे ही होगा. नॉक्टुआ, ओके, इसकी आंट. फिगर हाउ टू प्रोग्रेस. ओ, यहाँ रिपेलो करना है. रिपेलो यही वाला है ना? हाँ, रिपेलो यही वाला है. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. एक्चुअली इस वाले भी ये वाला रख लेते हैं. एक येलो वाला भी रखना जरूरी है, बाई चांस कोई आ गया तो. Must be the voice I hear. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a Parselmouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known Parselmouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak Parseltongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. There's no clear way forward. Revelio. Salazar Slytherin most likely wanted this to be different. Confringo! The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely. Revelio. For clues. Confringo! ओके, बहुत अंधेरा है, बट Brazier. When the door... This journal entry
It mentions getting lost and being unwelcome. Revelio! इधर कहीं पे जली लाइट बट either way let's use Dharma this. requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. मेरे को नहीं पता मैंने क्या Matching किया. the symbols did open it. Was about to do that myself. ओके But you got यहाँ to पे it दो first. सर्कल मैच हो गए हैं. Nice work. नाइस. ओके ठीक है समझ में आ गया. आंट का एक और. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. All I heard is More to rewards. solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Revelio! ओके इस वाले को देखना पड़ेगा कैसे खोलें. एक मिनट यार मैं वो लाइट ले आऊं जरा. अंधेरे में बहुत अजीब लग रहा है. मतलब डर वाला सीन नहीं है बट इससे अंदाजा ढंग से दिखेगा तो इससे अंदाजा पड़ जाएगा. अब ये वाला यूज कर सकते होंगे हम. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run and ओके गाइस ये हम लोग गलत वाले लॉक पे गलत वाला कर रहे थे. जब हमने गेट तो खोल लिया That है. sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos! बट अब हमें अगला वाला खोलना है जो कि इधर था. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Another. माउंटेन एंड पहाड़. Not the welcoming sort, was he? हो गया. ठीक है. मैं गलत वाले डायल पे गलत गलत कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था. Step closer to the scriptorium. उधर से ही जाना पड़ेगा. इधर से रास्ता नहीं है. Lumos! I spotted something ahead. Revelio. It's troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. आगे नहीं चल पा रहा हूँ. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Crucio. Ominous. Her skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Confringo. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family.
Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. ओके पहले क्रूशियो सीखेंगे हम. There you go. पहला कर्स. Ready? I'm ready. Oh. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. Revelio! But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? और ये सब क्या है? इतना लंबा कौन पढ़ेगा? Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's वो तो हम कर ही रहे हैं. breathtaking. Revelio. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. ओके इसका स्क्रिप्टोरियम. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Yeah, leave the travel Slytherin dungeon. Oh, dungeon. वैसे गेमों में पता है डंजन क्या होता है, बट इसमें क्या होगा वो मुझे जानना See a है. way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. चलो इसको अब पता चल गया इसके आंट के साथ क्या हुआ था, तब ये खुश है. यहाँ से हम स्पिक्टोरियम या जो भी वो जगह वहाँ जा सकते हैं वापस, बट वी डोंट नीड टू राइट नाउ. 85 HP और बढ़ गई हमारी. यहाँ पे जरा फास्ट ट्रेवल है वो अनलॉक कर लूँ, दैट विल मेक अ लॉट ईजियर. यहाँ पे कभी फास्ट ट्रेवल हुआ तो. कहाँ है यार
इस दीवार के अंदर रास्ता कैसे दिखा रहा है ये गेम? या तो नीचे से कहीं से है, क्योंकि डायरेक्टली यहां से तो रास्ता है नहीं। या तो ये गेट खुलेगा। Revelio. पता नहीं उसका वहां के रास्ता कैसे खुलेगा, टू बी ऑनेस्ट। अब एक्चुअली हैव नो आइडिया, बट ईदर वे लेट्स सी और क्या कर सकते हैं हम। अभी थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो क्या पता क्वेस्ट आ जाए, मेन क्वेस्ट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट आई डोंट नो। क्वेस्ट तो नहीं आ रही है। वी कैन जस्ट अपग्रेड, हमारे को टैलेंट पॉइंट मिला था उससे अपग्रेड कर लेते हैं एक तो। एंड देन सेकंड, ओके यहाँ पे क्रूशैलियो का वो आ गया होगा। हु एक्चुअली दिस इज एक्चुअली रियली कूल। नहीं एक सेकंड, ये क्या है? हाँ ये एक्चुअली ले लेते हैं, बाई चांस कभी हमारे पास हेल्थ कम बची तो थोड़ा काम आ जाएगा। Hello again. Were you able to get to Honeydukes? अरे इसका वो भी लेके आना है, नेवर माइंड। सिंस हमारे पास गेम कोई ऑप्शन दे नहीं रहा क्वेस्ट करने के, वी नीड टू डू साइड क्वेस्ट एंड ऑल, दैट्स फॉर श्योर। बट 6 इंक्रीज, फिर चेंज अपीयरेंस। यार बाय डिफ़ॉल्ट कर दो यार, कोई ऑप्शन दे दो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए जिससे, लेकिन देते ही नहीं है ऑप्शन ये। इन्हें सेल करना है मुझे, और किसी में थोड़ी ना कुछ आया नहीं, और किसी में कुछ नहीं आया। 1100 कॉइन हमारे पास हैं अभी करेंटली, बट मैं सेव करके रखना चाह रहा हूँ। बाई चांस अगर कुछ जन ने मांग लिया ऐसा तो आई विल हैव मनी टू बाय। नेटी से या फिर टॉक टू पोपी, डिमांडिंग डिलीवरी, गॉबस्टोन, स्टैच्यू, कॉन्ज्योरिंग स्पेलक्राफ्ट। ओके, यूज द मैप विथ फ्लोटिंग कैंडल टू फाइंड द ट्राई। नहीं ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये वाला कर लेते हैं, इससे गोल्ड भी मिल रहा है, और देखते हैं है कहाँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, सच बोलूँ तो। ओके यहीं पे दिखा रहा है एक्चुअली, तो ऑलमोस्ट यहीं पे दिखा रहा है। Revelio. As expected, Hogwarts architecture. एक यहाँ है, मैक्स कराना चाहते हैं क्या? मैथ्स 4 + 2 = 6, बट यहाँ पे सिंबल आता है ना, बात ये है, ये देखो सिंबल आते हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कौन सा सिंबल कौन सा है? ओके मेरा गैस सही निकला, बट मैंने जो काउंटिंग करी थी वो ये थी 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन ये है 0 1 2 3 4 ऐसे। तो अभी हमें चाहिए, अभी हमारे पास ऊपर है 2 + 4 है ना, तो अभी हम एक 0 चाहिए हमें, तो 0 इज गोना बी दिस वन, एंड फॉर द बॉटम वन ये 5 1 है और 2 क्वेश्चन मार्क है। जैसे आप लोगों ने देखा ये सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला था, मतलब ये ऊपर वाला इंटरेक्ट कर रहा था। अब ये नीचे वाला है, हमारे 5 और 1 हैं, एंड हमें चाहिए टोटल 11, तो 6 हो गए, 6 + 5, तो 1 2 3 4 5 ये हुआ स्पाइडर इश टाइप का जो है, जो जिसपे 4 पैर है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 स्पाइडर इश।
तो एक बार वो करके देखते हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन तो यही लिखा है, तो हम जस्ट गोना सी What are you up to now? if my guess is right, this is gonna be the one. Let's hope. अगर आ गया समझ में तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए फिर। हाँ नहीं, 0 से चालू होता है, मैं पहले उधर 1 से चालू कर रहा था उसे बस। दैट वाज द ओनली केस। आई गेस इट्स ऑलराइट, वी गॉट इट। बट जो हमारी क्वेस्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे थी भी नहीं। जो हमारी क्वेस्ट थी वो यहाँ पे थी भी नहीं। कि मुझे पता भी नहीं है कि वन आई वाली ये स्टैचू है किधर। आई हैव नो क्लू ये वन आई वाली स्टैचू है किधर। एक से नीचे कुछ है। This looks like the right statue. Okay. Now, what was the password? Descendium. Okay, nice. वो स्टैचू थी भी नहीं जिसका हम लोग इतना कर रहे थे। Who knew this was all down here? बट हमें वो तो पता चल गया ना कि कैसे करना है। A lift. Must be broken though. ये करना था हमें, बट हम लोगों ने ये नहीं किया और हम डायरेक्ट छलांग मार दिए। That seems to have done the trick. चलो रिपेलो से हो तो गया ना, मेन बात ये है। Here we are. This castle will never cease to surprise me. अब ये इतनी बड़ी जगह है, पता नहीं कहाँ से रास्ते निकल आते हैं। You never know कहाँ से एक्चुअली रास्ते आते हैं। मैं उधर मार रहा हूँ और वो इधर है। इतना मुझे पता चल गया कि मकड़ी की आवाज आ रही है। Revelio. एकदम से आएगी तो। Confringo. और ये तो हम शुरुआत में आ गए हैं। अब तो मुझे करना आ गया ना, पहले मुझे पता नहीं चलता था कैसे करते हैं। अब मुझे पता है कि कैसे करना है। तो Wingardium Leviosa. ओके, मैं समझ गया। इसको यहाँ तक रखना है, Arresto Momentum. फिर अरेस्टो मोमेंटम करना है और ऐसे करके जाना है। Going to have to get past this. 10 तरीके अलग अलग इंटरेस्टिंग। Revelio. इसके साथ भी वही होगा। Wingardium Leviosa. चाहे पानी है, फालतू मृत्यु हो जाती या डैमेज होता है। एक्चुअली इतनी हाइट से मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए थी, बट हाँ। Leviosa. ओके, इसको इस वाले से करना है। Wingardium Leviosa. Leviosa. इसमें पूरा ही नीचे गिर गया। ओके, मतलब हमारे पास चीजें सारी हैं, बट तरीका हर चीज को करने का अलग अलग है। ओके, we have every little thing, but the tarika how you can do it is different. Confringo.
Levioso. पत्थर पे जाके लग रहा है. Something is getting in the way of that platform. ओके हो गया शायद. Levioso. Aha, got it. ये कीबोर्ड माउस पे इतनी एबिलिटी चेंज करना This थोड़ा must be ज्यादा the way आसान होगा. out. I need to find a way to open that gate. Confringo. Revelio. ओके एक सेकंड, इधर चेस्ट है. तो कुछ खास मिला नहीं है. इंटरेस्टिंगली इनफ बोला ही नहीं जा रहा भाई, हद है. बट चलो रास्ता तो मिला. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. हनीड्यूक्स एग्जिट. ये हनीड्यूक्स आता किधर है जो ये ऐसे छुप छुपा के जाना. ओके हॉक्समीड आ गए तो हम तो नॉर्मली भी तो जा सकते थे. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the... बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए. मेरे को लगा मैं पूरे पीछे चला गया इसलिए मैंने ऐसी आवाज निकाली. मेरे को लगा उधर ही होगा तो इसलिए मैंने. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried... I have the dried billywig things. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Revelio. कागज कहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं. तो 700 मीटर दूर है. वहां से जाना ज्यादा इजी नहीं है. एक्चुअली लैडर किस चीज के लिए है? आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ दिस लैडर. Yeah, really, I don't see a point of this ladder. But बाहर निकल के फास्ट ट्रेवल ही करने ज़्यादा सबसे इजी है. चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं तो वो. Revelio. We'll Honeydukes. Nice collection updated. Let's go to map. Hogwarts map. Okay, I have an idea. Why don't we go for locate on map? That will actually zoom in. इसलिए मैंने कहा locate on map कर देते हैं. यही कर लेता हूँ. उसके बाद जाके देखते हैं कि ये क्या, मतलब हमें गोल्ड मिलने वाला था और अपीयरेंस. Travel broadens the mind. तो दैट आई एम क्यूरियस अबाउट. ये कितना गोल्ड देगा और अपीयरेंस में कौन सी अच्छी चीज मिलने वाली है. हाय. Hello again. Were you able to get to Honeydukes? That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Thought for certain you'd have helped. It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. अरे दूसरी बात करनी थी. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible.
Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. फिजिंग विज वेयर ओके कोई बोर्ड अनलॉक हुआ 180 एक्सपी 300 गोल्ड अपीयरेंस में कुछ नहीं मिला बट अब जो भी है जैसा भी है अब क्या ही कर सकते हैं ओके लेट्स एक्चुअली कंप्लीट वन मोर क्वेस्ट ये हमारी खुल गई शैडो ऑन ये अंडरक्रॉफ्ट वाली एटलीस्ट बात तो कर लेते हैं बाकी अगर क्वेस्ट चालू होगा तो तब का तब देखेंगे बट वैसे मेरे को पक्का नहीं है कि क्वेस्ट चालू होने वाली नहीं होने वाली है अंडरक्रॉफ्ट की सबसे हम जस्ट गोना फास्ट ट्रैवल है एक बार बात करके देख लेते हैं चालू होती तो ठीक है नहीं होती तो भी ठीक है How nice to see you, my young friend. अरे कूदने नहीं दोगे Whenever I hear from Hogwarts, tell me my child has broken लेट्स एंटर all rules again. इधर स्क्वायर इतने ज़्यादा होल्ड करना पड़ रहा है लेकिन उधर जो हम लोगों ने गलती से कर दिया था उधर कम करना था Hi, Sebastian. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further.
But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. हाँ, अभी दोनों का अभी से भी एक से छुपाना है, एक को बताना है, फिर एक को बताना है, एक को छुपाना है। क्या है यार, ये गेम की शुरुआत से ये क्या चल रहा है भाई? कभी छुपाना है, कभी बताना है। कंफर्म कर लो भाई। ओ सेबेस्टियन, उसका कोट ऐसे क्यों उड़ रहा है? आई डोंट नो, उसका कोट देख रहे हो? हाँ, कैसे उड़ रहा है कोट या जो भी है, स्कूल यूनिफॉर्म। बट जो भी है, मैं अभी के लिए तो वीडियो में एंड करूंगा गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, पीस फॉर नाइट 9 आउट।